Flex wrap. And self. Next. This one. Yeah, people, I'm calling others with. हाँ हम लोग कंटिन्यू करेंगे चलिए पहले तो ये ट्राई किया है डिड एनीवन ट्राई दिस वन लेट मी नो यस और नो हाँ हाफ डन I thought it was similar to the previous one, so I was doing that previous one itself. तो प्रसन्न ने किया है ना হৃদয় কৰিছা নেকি এইটো দিছ ওৱান নাই মই ট্ৰাই কৰা নাই এইটো ওকে ওকে ট্ৰাই কৰা ঠিক আছে মই দেখুৱাই দিওঁ এক্সপ্লেনেশ্যন হৈ যাব মানে এইটো হা Flexbox ইউজ কৰিব দিছিলে ন yes only Flexbox so let me show how it is done so we have to first check the UI এইটো মই ডাউনলোড কৰি লওঁ as an image this one so first of all we have a black div so sobotকৈ bahir eta div thakibo then inside this we have one logo brand logo link to moi disilo so we have to copy this brand logo okay not given so let me just check search Adidas logo we can simply click one of the image white color to long right click copy image address
तो इसको IMG SRC में डालना पड़ेगा। इंटरनेट इशू होने से बताना। हाँ, इसमें मैं इनलाइन स्टाइल लगा देता हूँ, एक ही चाहिए शॉर्टकट, मतलब अभी के लिए मैं इसको स्टाइल में दूंगा विथ अराउंड 60 पिक्सल्स, तो इसका हाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। सो अभी क्या हो रहा है, दिस वी कैन इमेजिन एज अ फ्लेक्स बॉक्स। ओके, दिस थिंग वी कैन इमेजिन एज अ फ्लेक्स बॉक्स, बिकॉज इसमें ये पेरेंट है ब्लैक कलर वाला और इसके अंदर आइटम्स है। ठीक है, इसके अंदर दो आइटम्स है बेसिकली, देयर आर टू आइटम्स हियर। सो द फर्स्ट item is this one, okay, this image. This first of all, ये black color जो div है ना, this is the parent, and inside this we have two items. This is one image item, and this is one div element. This is one single div element. हाँ, इसके अंदर तुम्हारा अलग अलग elements हो सकता है, no doubt. There can be various other elements, but that does not matter. Only direct children matter, हाँ, in Flexbox. Flexbox में तुम्हारा वो जो parent container है, as we know, Flexbox में दो concept रहता है, one is for parent, one is for child. सो पेरेंट्स कंटेनर में तुम लोग का दो आइटम है, इधर दो डायरेक्ट चाइल्ड है। दिस इज द डायरेक्ट चाइल्ड विच इज आवर इमेज, एंड दिस इज वन डायरेक्ट div element. Inside this div element you can have whatever elements you like, it does not matter. So what matters is this direct elements. So this direct child elements are two of them. और इधर देखो हम लोग ने जस्टिफाई कंटेंट यूज किया है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ओके, स्पेस बिटवीन। सो देयर वर वेरियस अलाइनमेंट पोजीशंस पॉसिबल here. Some was first of all was flex start, मतलब स्टार्टिंग में सब आइटम्स रह जाता है, चाइल्ड आइटम्स। सेकेंड वाला था फ्लेक्स एंड which pushes all the items towards the end of the main axis. तो मेन एक्सिस वो भी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। देन सेंटर्स सारा एलिमेंट्स को बीच में लाता है। स्पेस बिटवीन व्हाट इट डज, इट ट्राइज टू सेपरेट द एलिमेंट्स एज फार एज पॉसिबल। जो जो इंडिविजुअल आइटम्स है जितना दूर हो सकता है पुश करता है। स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड थोड़ा अलग होता है। स्पेस अराउंड में हर एक आइटम, फॉर एवरी आइटम देयर इज इक्वल स्पेस। हर एक आइटम का इक्वल इक्वल स्पेस रहता है। अराउंड ईच आइटम देयर आर इक्वल स्पेसेस, ठीक है। बट इन स्पेस इवनली एवरी गैप इज इक्वल। स्पेस अराउंड में देखो क्या होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग में इक्वल गैप, बीच के जैसा गैप नहीं रहता है, बिकॉज बीच में क्या होता है, लेफ्ट साइड आइटम का गैप रहता है और राइट साइड आइटम का भी गैप रहता है ना, वो दोनों गैप ऐड होके बड़ा दिखाई देता है। बट इन द एजेस इट्स ओनली वन गैप फॉर ईच आइटम, इसलिए ज्यादा नहीं दिखाई देता। बट इन स्पेस इवनली एवरी सिंगल गैप इज इक्वल, दैट्स द ओनली डिफरेंस। The spaces are equal, space evenly, so the spaces are even. Okay, so here in our case for this design we need to use space between. मैंने एक चीज बताया था that flex start, center and space between, these three are used most of the times. Flex start, center and space between, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। So first we have to ensure that we have two direct child elements inside this div element. So this is our parent div element. We can give any class name. Let me give parent to reduce confusion. So इसके अंदर I want to make two child elements somehow. देखो, now we have two child elements. The first element is the image itself and the second one is the div. Yes, you can also put inside one more div element if you want. तो इस image को ना हम लोग एक div element के अंदर भी रख सकते हैं if you want to put some padding, something like that, हाँ। अभी div के अंदर हम लोग का तीन buttons है। Does not matter, whatever you want to put inside that child tag you can put. That's not related to flex, whatever is inside this. इसके अंदर हम लोग बटन बना सकते हैं। So maybe home, फिर shop, home, shop, contact, ठीक है। Then each of these buttons I'll add classes. तो इसमें मैं क्लास दूंगा, suppose btn बोल के simple class दे रहे, so that I can give some blue color, right? This is basic CSS, not advanced CSS. और इधर nothing is required here, and parent class को तो दिया ही है, yes. So now we will open our CSS style sheet rule. So here I will use dot parent, the class name, to style this CSS for this parent. इधर मैं first step flexbox यूज करने के लिए क्या करूंगा, display colon flex. This is the first property that you must add. Otherwise none of the other properties will work, हाँ। बाकी property जैसे तुम्हारा flex direction क्या करता है, it allows us to set the main axis and cross axis. So here few days ago I sent an image. What is main axis and what is cross axis? So main axis is the axis of the flex, okay. जो भी flex box तुम लोग ने बनाया है उसका main axis में elements flow होता है। So by default main axis is the x axis, मतलब row direction में flow होता है items, एक के बाद एक row direction में आएगा। Then cross axis is the opposite direction, the perpendicular direction of the main axis, हाँ? तो if it is row, main axis हम लोग का x होता है और हम लोग का कॉलम में क्रॉस एक्स मेन एक्सिस y होता है। देन क्रॉस एक्सिस इज द ऑपोजिट वन।
सो दिस जस्टिफाई कंटेंट जो प्रॉपर्टी है ना, ये क्या करता है, इट अलाउस अस टू एडजस्ट द अलाइनमेंट ऑफ द आइटम्स इन द मेन एक्सिस. तो फ्लेक्स डायरेक्शन तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा रो ही होता है, सो वी डोंट हैव टू ऐड फ्लेक्स डायरेक्शन रो हियर, बट इफ यू वांट यू कैन स्पेसिफाई इट, इट्स ऑप्शनल. नाउ अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपली फर्स्ट लेट अस चेक, हाँ फर्स्ट लेट अस चेक व्हाट इज द आउटपुट. सो लेट मी ओपन दिस desktop css flexbox open with google chrome. So this is the output. You can see items हम लोग का एक के बाद एक आ रहा है, even though this is a div element, right? तो ये जो parent हम लोग ने display flex किया है, even though it is a div element, it does not matter whether it's a span element, div element, inline element. There is no issue with that, huh? Whenever you use flexbox, whichever direction you have given flex direction, if it is row, all the items will always flow in the row direction. You have to remember that. 1 minute. Okay, so let me give some black color here, background color black, padding 15 pixel, like this. We can also reduce the darkness by using the hexadecimal code, but here our user interface design is not the main issue. The main thing that we want to learn is using Flexbox. इधर मैं simply एक button class लगा सकता हूँ to add some padding, not 15 pixel, 5 pixel, background color Dodger blue, yeah, border none, color white. अभी देखो, this is our first item, जहाँ पे इमेज है, दिस इज आवर फर्स्ट आइटम, राइट? और ये जो तीनों बटन है ना, सेकंड डिव एलिमेंट में है, ठीक है, इन दिस सेकंड आइटम. सो वी हैव टू आइटम्स, दिस इज आइटम 1, दिस इज आइटम 2. सो नाउ बोथ ऑफ देम आर ऑन द लेफ्ट साइड बिकॉज जस्टिफाई कंटेंट का बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या होता है, फ्लेक्स स्टार्ट. सो इफ वी डू स्पेस बिटवीन, इफ वी मेक स्पेस बिटवीन, तो क्या होगा, द आइटम्स विल बी सेपरेटेड, ओके, दे विल बी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. So we have to say justify content space between, justify content space hyphen between, like this. So parent class में मैंने justify content space between दिया. Now if I reload this, you can see now the items are as far as they can, they are apart from each other, huh? ठीक है? So now we have achieved similar to this, but you can see still it's not aligned properly, right? It's not aligned vertically. Basically cross axis में alignment नहीं हुआ है. अभी तक तो ये समझ में आ रहा है ना? कुछ confusion, इंटरनेट इश्यू आने से बता देना, हाँ? So now we have aligned in the main axis, but we know there is also one more dimension, which is the cross axis. Cross axis is the vertical opposite direction, not vertical, sorry, opposite direction, perpendicular direction. So अगर तुम्हारा main axis y है, तो cross axis तुम्हारा x होगा. Similarly, तुम्हारा अगर main axis x है, cross axis y होगा. So to adjust the alignment in the cross axis, the property that we need to use is align hyphen items. This one, align hyphen items. इसमें भी तीनों values similar है. Flex start, flex end, center. Center will horizontally align the items in the cross axis. Flex start will bring all the items to the beginning of the cross axis. Flex end will move all the items to the end of the cross axis. Okay. और stretch by default stretch रहता है, हाँ? Stretch रहने की वजह से तुम लोग का ये stretch हो रहा है. Let me prove it to you that it is stretched. We can put some background color here. I am putting inline style for now. Background color green. Let me show you it is stretched. देखो stretch हुआ है. So I can put some other color, light green. So you can see this box is stretch हुआ है, okay, stretch. मतलब इसका height बढ़ गया है. Even though it was supposed to contain only those elements and it was supposed to be shorter, इसका height expand हो गया है because of this one, huh? Stretch. तो अगर हम लोग चाहते हैं stretch नहीं होना चाहिए, if we want all the items to center, then we have to use align items. क्योंकि ये cross axis है ना, align items center. 1 minute. Why are you making noise? Hey, go outside and play in the car. Go. Go outside and play in the car. So whenever we use these align items, it centers our items vertically because our main axis is the x-axis. So अभी देखो center हो गया है vertically. So now it's looking like this image. So you can increase the button padding if you want, or reduce this padding of the parent. ठीक है? Then it will be similar to like this, and we can remove this background color light green. It was for debugging purpose. अभी तो ठीक है. अभी ये इमेज में जो div है ना, उसको भी हम लोग हटा सकते हैं. Then कुछ ऐसा इशू नहीं आएगा.
तो इमेज भी सेंटर हो गया प्रॉपर्ली। तो div की वजह से थोड़ा पेडिंग वो आ रहा था, ठीक है। टिल दिस div आई थिंक इट्स क्लियर, राइट? समझ में आ गया है? पीपल डिड यू गेट दिस? ओके ओके। अभी नीचे नीचे एक है, देयर इज अ स्मॉल div element with a form, let us quickly do that. So now this should be separate from this, okay? ये जो था, our work is done with this. We don't want to insert again items, create something, again mess up with it. No, you don't have to touch this anymore. और वैसे भी इसका बैकग्राउंड कलर भी अलग है, हम लोग को पता ही है. So there's a clear separation. That's why we have to open div like this. For this second form, there is a small form here. You can see it's like using the grid system. Okay, हम लोग को ऐसा लग रहा है that there is some kind of grid system here. So name हम लोग का लेफ्ट साइड में है और फॉर्म का इनपुट राइट साइड में है. So this is not any grid system. This is Flexbox. Each item, इधर हर एक जो ये है ना, हर एक फॉर्म का जो एलिमेंट काइंड ऑफ थिंग, दिस वन यूजिंग दिस लेबल एंड दिस टेक्स्ट इनपुट, each of these items are Flexbox. Okay, and there is space between. Okay, between them, space between. There is space between each of them. Let me show you. तो फर्स्ट तो हम लोग का div हो गया, इसमें हम लोग दे सकते हैं div या form tag whichever you want. I can give form. फिर इसके अंदर हम लोग का we need items, we need div elements. Okay, each of the item is a flex box. Each of the item is a flex box with two elements inside this, two child items. इसमें एक child item, इसमें एक child item. I don't know you'll get or not, but let me show you. इधर मैं क्लास दूंगा, सपोज फॉर्म कंटेनर या फिर इनपुट कंटेनर. इनपुट कंटेनर में हम लोग दो बनाएंगे, स्पैन div whichever you like you can use. स्पैन में मैंने नेम दिया इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये बनाया. प्लेसहोल्डर में भी we can use, or is it there? No need, ऑप्शनल. तो देखो इनपुट कंटेनर बोल के हम लोग ने एक div बनाया और एक div बनाया इनपुट कंटेनर. ओ अच्छा अच्छा, कभी कभी तुम्हारा भी ऐसा होता है ना, मतलब वाईफाई का? हाँ ब्रो होता है. ओके ओके, पता नहीं ऐसा क्यों होता है. वाईफाई को तो स्टेबल देना चाहिए इंटरनेट. ओके ठीक है. नाउ यू कैन सी दिस इज अ फॉर्म एलिमेंट. ये फॉर्म एलिमेंट को पहले स्टाइल कर लेते हैं. लेट मी सिंपली पुट बैकग्राउंड कलर हैश 555 और मे बी लिटिल बिट लाइटर, सम पैडिंग 15 पिक्सेल्स. दिस वन. अभी ये फुल विड्थ क्यों ले रहा है? बिकॉज एज वी नो इट्स अ ब्लॉक एलिमेंट. ओके, दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग फुल विड्थ. वी कैन आल्सो यूज सम मार्जिन 15 पिक्सल. ठीक है, मार्जिन 15 पिक्सल कर दिया. नाउ इसको सेंटर में लाने के लिए हम लोग विड्थ को रिड्यूस कर सकते हैं. ऑफ कोर्स विड्थ वी कैन मेक 300 पिक्सल. वी कैन लुक, हम लोग इसको फ्लेक्सबॉक्स से भी सेंटर कर सकते हैं, बट फॉर नाउ ठीक है, चल जाएगा. मैं सेंटर करने का ब्लॉक एलिमेंट टेक्निक वाला यूज करूंगा. यू कैन आल्सो सेंटर यूजिंग फ्लेक्सबॉक्स. हाउ? इसको ना इस फॉर्म को एक फिर से div एलिमेंट के अंदर डालना पड़ेगा. फिर उस div एलिमेंट में डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ये दोनों को देने से आइटम परफेक्टली सेंटर हो जाता है. तो अभी के लिए ऐसा ठीक है. ये जो ब्लॉक एलिमेंट है ना, इसका सेंटर करने का टेक्निक है हम लोग का मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो. हाँ, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो. So using this you can center any particular element. Then maybe put some border radius for some good appearance. Now ये input हम लोग का कैसा है देखो, name, email. In the design, the inputs are on the edges. Okay, that's it. The inputs are to the far right side, and the label or name is to the far left side. This is possible because of justify content space between. So हर एक आइटम को फ्लेक्स होना पड़ेगा. So this input container class मैंने जो दिया है वो पेरेंट जैसा हो गया. ओके, दिस इज आवर फ्लेक्स कंटेनर. फ्लेक्सबॉक्स का हम लोग ने जब कंसेप्ट स्टार्ट किया था, in the beginning itself we got that it can be it's applicable in two things. Okay, the first one is the flex container and the second one is the flex item which we are going to check today. फ्लेक्स कंटेनर हम लोग का वो होता है जिसके जो मतलब आइटम्स का पेरेंट, जहाँ पे हम लोग फ्लेक्सबॉक्स को अप्लाई करते हैं. द मेन कंटेनर, हाँ, जिसके अंदर हम लोग का आइटम्स रहता है, जिसको हम लोग फ्लेक्स आइटम्स भी बोलते हैं. सो वी हैव टू फ्लेक्स आइटम्स एंड रिमेंबर फ्लेक्स आइटम्स आर द डायरेक्ट चिल्ड्रन. हाँ, डायरेक्ट चिल्ड्रन वाला, नॉट दिस इनर चाइल्ड. इसमें हम लोग ने ऑलरेडी देखा है कि ये div इज द डायरेक्ट चाइल्ड, but inside this we have inner items, so it does not matter whatever they are. So direct child only consider होता है. So we have two direct child, and if we make this input container a flex box, then we can apply justify content space between. तो क्या होगा, ये बीच में ऐसा गैप आएगा. हाँ? तो हर एक आइटम को फ्लेक्स होना पड़ेगा. तो जितना भी हम लोग का फॉर्म एलिमेंट्स होगा हर एक आइटम को फ्लेक्स करना पड़ेगा.
So then no need of using bootstrap grid system here, because उसमें टैग्स हम लोग का थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. Display row, display call, ऐसा हर बार इसके अंदर रखना पड़ेगा स्पैन को. Again we have to open new grid system, column 6 like that. So we can use this one. We can also do like this. Display flex, just 2 line. Justify content space between, and that's it. Just 2 line का काम है. I just wrote 2 lines of code, and let us see. ये देखो side में चला गया. Okay. Yes, we can put some margin bottom, ताकि ये नीचे का जो है थोड़ा नीचे चला जाएगा, नीचे का items like this. You can reduce the margin, but the main thing that we wanted to learn was Flexbox. Huh? So this is how you can achieve. So let me send this code so that you can study इस code को study करना. Let me create a document and send. इसमें कुछ confusion है तो पूछ सकते हो, हाँ? If you did not get any point how we designed this, okay? One minute. Let me take screenshot. Vipul, did you get this? No, actually I am out, so that's why I am not being able to hear nicely. Okay, Although, okay. yeah, actually I was shifting from since, like today, so that's why tomorrow also I'll be traveling whole day. But from there, then I Oh. think it should be a little bit easy. Are you out of Assam again, or? No, no, I will be leaving tonight. Oh, okay. Again, some So meetup. for that, pardon? Again, I think you took some event or meetup. No, no, actually I was shifting to Sikkim, right, for a Oh, while. okay, So okay. I was relocating there for a while. हाँ हाँ. So for that, actually, today I will leave from Guwahati. So Oh, you have to catch the for train. that reason, yeah, tonight, sometime my train is. So I thought actually I will not be able to join. So I'll tell you. But then I thought it was a little the train was a little later. So I thought, okay, why not? I can join. Then I should. So yeah, Okay, okay. That's, I think then good thing we did the class early, I think. yes, yes, definitely. We missed a lot of class yesterday due to rain, and again that day before the some issue Okay. happened. Yeah, that's why. Uh, I'm working on the assignment though. I like Yeah, went yeah. to Please, Prashant's place and yeah. I did a little bit more in the functions bit, but there was some this coding issue or maybe some issue in my code, so it was not running. Okay, okay. But I thought that because I was like planning on leaving, I had to do like a very rush planning because I didn't know Oh, when to go and the trains were not available. So I found this like a last moment train in is like it a very short Tatkal? Is time. it Then, Tatkal or something? pardon? Is it Tatkal class or something? Yeah, Tatkal, yeah. So I did Okay, okay. like the timing was good actually because if I reach and like Siliguri or NJP in the evening, I will Ah, not get any vehicle to go to Gangtok because that's where I okay, have to okay. reach. Okay, okay, okay. So for that, Fine. today I Hmm. found so Oh. after reaching there, I think it should be if my internet works fine, then it should be decent. I can attend more nicely because I will be there for some time, Uh-huh. not traveling there. Okay, 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 okay. Yeah. Fine. All right. Let us continue to Okay. flex wrap is there. I will tell the flex wrap for now. इसके नीचे और कुछ properties है like align content. This we can ignore for now. We can ignore for now. We can do this gap. Okay. Row gap, column gap. इसको करवा देता हूँ मैं. So row gap, column gap is used whenever you want gap between these items. Okay. Yes, yes. Hriday, Hello, Hriday. Bharat. Yes. Yeah, really sorry, but can you record this session and upload? It Okay, will be okay. very nice. Then. Yeah. Fine, fine. It's already being Thank recorded. you. Okay. Okay. देखो Hriday asked the question, can we adjust the gap like this on previous class? Yes, you can adjust the gap using this gap property. Huh? You can use row gap and column gap. This one. Row gap or column gap. Using row gap will increase the spacing between these horizontal directions, the row direction, and using column gap will increase the spacing between these columns.
ये कॉलम है, कॉलम दिस वन. 1 minute, मैं समझाता हूँ. Let me take one screenshot. What is column gap and what is row gap? This is column, okay. This is column gap. This one column vertical. This is column gap, and this is the row gap. Row मतलब this one row one, row two. ऐसा टेबल में जैसा हम लोग का row one, row two रहता है ना. So the gap between the rows. Similarly, how you create rows in Bootstrap like this. So the gap between the rows is the row gap, and the gap between the columns is the column gap. So whenever you use column gap, it will give you gaps between each of the column. Huh? Whatever value you give, हर एक column में apply होगा. Not only for one column. Okay, it will be applied to every single column. Let us check. We have to again create this Flexbox, normal Flexbox code, which we did last time. So we have two items. मैंने item बोल के ही class दिया है. 1 2 3. So parent is already Flexbox dot item. Center justify align item center. Okay. Background color blue. Padding no. Okay, padding कुछ दे सकता हूँ so that it at least shows something. Okay. Blue boxes आ रहा है. Okay, these three are the blue boxes. अभी ये सबसे दूर दूर क्यों है? Because it is space between. Justify content space between. So we can also remove this. Then each of all of them will be attached. If we give a border, then we can see them. Border 2 pixels solid black. So using this border, we can see that each of the items are attached one after the other because by default हम लोग का justify content flex start होता है, right? अभी now we'll use this gap property, huh? Column gap and row gap. So don't focus on this for now. Gap we will come later. Just focus on this row gap and column gap. So column gap क्या करता है? It increases the gap between each of the columns. Now you can imagine this is column 1, this is column 2, right? Column मतलब ऊपर से नीचे, vertical. So column hyphen gap. So whenever we give some property like 5 pixel, तो हर एक item के बीच में, sorry, I gave column gap here. It should be given in the parent, okay? Not child. मैंने गलती से child में दिया था, that's why it was not working. Now say 15 pixel. तो हर एक item के बीच में 15 pixel का gap आएगा. Don't use margin instead of this. तो तुम लोग एज यू नो मार्जिन भी यूज कर सकते हो बट मार्जिन देने से ना इनकंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेगा. इनकंसिस्टेंट तो ये बाहर भी ऐसा ऊपर भी थोड़ा गैप आ जाएगा. इट्स इनकंसिस्टेंट स्टार्टिंग और एंडिंग में भी इट विल नॉट बी प्रॉपर. आई मीन यू विल हैव इश्यूज एडजस्टिंग द फ्लेक्स बॉक्स. सो यू कैन यूज कॉलम गैप व्हिच इज मच बेटर. So it will make sure that there is gap, whichever gap you specify here, whichever amount of gap you need, you can specify. तो हर एक आइटम के बीच में, हर एक आइटम के बीच में, हाँ, not in the starting. Remember, मार्जिन देने से क्या होता है? स्टार्टिंग में भी तुम्हारा गैप आ जाता है. राइट साइड में तो आएगा. Unless you give margin left 0. तो देखो कॉलम गैप मैंने दिया 10 पिक्सल, देन इट लुक्स लाइक दिस. सिमिलरली वी कैन आल्सो गिव रो गैप. बट रो गैप देने से पहले हम लोग को एक चीज देखना पड़ेगा कि रो हम लोग का मल्टीपल कैसे बनाए फर्स्ट ऑफ ऑल. हाँ, नाउ लुक एट दिस. इफ आई कॉपी दिस मेनी टाइम्स तो ये नीचे जाएगा कि नहीं? लेट अस चेक. इट इज नॉट गोइंग डाउन. लुक, ये ओवरफ्लो हो गया है. इफ आई जूम आउट देन हाँ तब तो छोटा हो रहा है. बट इफ आई जूम इन यू कैन सी देयर इज सम ओवरफ्लो. हाँ, हम लोग का इधर दिखाई दे रहा होगा. इट इज फ्लोइंग अक्रॉस माई स्क्रीन. ये हम लोग का जो div एलिमेंट बॉक्स है इसके बाहर जा रहा है. इट इज ओवरफ्लोइंग. ठीक है, इसमें. सो इफ यू वांट टू प्रिवेंट दैट, ठीक है, इफ यू डोंट वांट ओवरफ्लो, इफ यू वांट इट टू कम डाउन इंस्टेड ऑफ ओवरफ्लोइंग, तो फ्लेक्स बॉक्स का बाय डिफॉल्ट क्या होता है? रैपिंग नहीं होता है. इसको रैपिंग बोलते हैं बाय द वे. सो इट डज नॉट रैप. ओके, इट डज नॉट कम डाउन. आइटम्स नीचे नहीं आता है. सो इफ यू वांट टू मेक दिस आइटम्स कम डाउन, ठीक है, देन यू हैव टू यूज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड फ्लेक्स रैप. ऊपर है. हाँ, if you, I don't know you have checked this document or not, but if you have not checked then check it. Here there will be one property called flex wrap. Flex wrap property इसको देखो डायग्राम, check the diagram carefully. एक के नीचे मतलब नीचे आने का allow करता है. हाँ, it allows the items to flow downwards. Okay, downwards मतलब हाँ next row में आने का ये possibility हो जाता है. मतलब it becomes possible to flow downwards. In case of row, हाँ, flex direction row. In case of flex direction column, it will be column wise. So we have to use this flex wrap property, either flex wrap, and you have to give the value wrap wrap. Okay, इसको देने से क्या होगा? The items will flow downwards like this. ठीक है, so items flow downwards like this when you give the flex wrap property. अभी हम लोग रो गैप यूज कर सकते हैं. why can we use रो गैप?
बिकॉज अभी हम लोग का दो रो बन गया ना, ऊपर वाला हम लोग का पहला रो, नीचे वाला सेकेंड रो. सो वी कैन नाउ अप्लाई रो गैप. इवन इफ इट वाज नॉट देयर वी कुड हैव अप्लाइड, बट देयर वुड बी नो इफेक्ट बिकॉज ये दोनों के बीच में ही आएगा. ओनली बिटवीन दिस टू रोज द गैप विल बी अप्लाइड. देयर विल बी नो गैप इन द एजेस. ऊपर नीचे एजेस में नहीं रहेगा. देयर विल बी गैप्स ओनली बिटवीन द रोज. सो इफ आई कॉपी दिस अगेन मल्टीपल टाइम्स, मुझे थर्ड रो भी मिल सकता है लाइक दिस. सॉरी, इट वेंट आउट ऑफ द फ्लेक्स बॉक्स. इसमें कुछ गलती हो गया है. ओके, हाँ. सो यू कैन सी, सो दीज आर माय रोज. हाँ, एक के नीचे एक आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी. बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, नो रैप बोल के एक प्रॉपर्टी है. इट्स नो रैप बाय डिफॉल्ट. हाँ, नो रैप. सो वी हैव टू गिव रैप. रैप रिवर्स भी है तुम लोग का, रैप रिवर्स लाइक दिस. ये उल्टा उल्टा डायरेक्शन में रैप होता है. सो इफ वी गिव नंबर्स, इट विल हेल्प अस आइडेंटिफाई 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. फ्लेक्सबॉक्स को ना बार बार स्टडी करना पड़ता है. ओनली देन यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड. सो रैप रिवर्स को देखो. व्हेन आई गिव रैप रिवर्स, रैप हाइफन रिवर्स, उल्टा तरफ में रैप होता है. इट मींस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इट कीप्स ऑन रैपिंग. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 like this in the opposite direction. So we have to give normal wrap if you want it to come down like this. 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12. ठीक है. तो कभी ऐसा होता है, हाँ, whenever there are a lot of items, it sometimes becomes necessary to let the items flow downwards. तभी तुम्हें यूज करना पड़ेगा फ्लेक्स रैप. बिकॉज बाय डिफॉल्ट इसका नो रैप रहता है. नो रैप मीन्स इट विल नॉट फ्लो डाउनवर्ड्स. ठीक है. सो वी हैव टू यूज दिस रैप प्रॉपर्टी. तो कॉलम गैप क्या होता है, दोनों रो के बीच में गैप को इंक्रीज कर देता है. व्हाट इफ वी हैव फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम. फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम देने से, ओके, व्हाई इट इज नॉट रैपिंग, डू यू नो कॉलम में रैप क्यों नहीं हो रहा है. दिस वन, दिस इज नॉट रैपिंग बिकॉज हम लोग का डिव एलिमेंट क्या होता है, जितना भी हाइट चाहिए ना वो एक्सपैंड हो जाता है. इवन तो हम लोग ने एलाइन आइटम सेंटर दिया है, बाय डिफॉल्ट तो एलाइन आइटम स्ट्रेच रहता है, तो ऐसा होता था. ओके, तो एलाइन आइटम सेंटर जो कि हम लोग ने दिया है, इट्स कमिंग लाइक दिस. तो इफ यू वांट इट टू फ्लो, इफ यू वांट इट टू रैप, हम लोग को इसमें ना हाइट को रेस्ट्रिक्शन डालना पड़ेगा. इन दिस पेरेंट डिव we have to give some restriction so that it cannot expand infinitely. Otherwise कभी wrap नहीं होगा, it will just keep on expanding. So we have to stop the div from expanding so that the child elements they wrap up like a chocolate wrapper. Okay, height को मुझे करना पड़ेगा around 200 नहीं, around 400 पिक्सल में अगर कर दूंगा then it should wrap. देखो, this time the items are wrapping. अभी align item center को वो छोड़ दो, नहीं चाहिए, तो it's wrapping like this. हाँ, now let us check the row gap and column gap. रो गैप को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो हाँ, ये रो ही है. ओके, इट्स फिक्स्ड. तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू इंक्रीज द रो गैप, इट डज नॉट मैटर वेदर द फ्लेक्स डायरेक्शन इज कॉलम और रो. रो मतलब तुम लोग का रो गैप मतलब रो ही समझ लेगा. इवन दो द फ्लेक्स डायरेक्शन इज कॉलम और रो, डज नॉट मैटर. रो गैप ऑलवेज विल मीन रो गैप. हाँ, जो हम लोग का रो डायरेक्शन है, वेदर इट्स फ्लेक्स डायरेक्शन रो और वेदर इट इज फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, इट डज नॉट रिवर्स द रो गैप एंड कॉलम गैप लॉजिक. हाँ, कॉलम गैप मतलब हमेशा कॉलम ही इसमें होगा. ठीक है. तो यूजिंग रो गैप एंड कॉलम गैप यू कैन इंक्रीज द स्पेसिंग बिटवीन देम. ठीक है. इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो. हम लोग ने दो प्रॉपर्टी आज डिस्कस किया है. हाँ, फ्लेक्स रैप. सो व्हेनेवर द आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स एक्सीड्स द लिमिट, ओके, और जो एक रो में जितना रह सकता था उससे अगर लिमिट को एक्सीड करता है, देन मेक श्योर यू पुट फ्लेक्स रैप एंड इसका वैल्यू रैप होना चाहिए. इसमें दो अदर पॉसिबल वैल्यूज भी है. बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू होता है नो रैप. इट्स रिटन सो नाइसली हियर, नो रैप डिफॉल्ट. फिर रैप रिवर्स, इट विल रैप ऑनटू मल्टीपल लाइंस फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब उल्टा डायरेक्शन में रैप होगा. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द रो गैप एंड कॉलम गैप. डोंट लुक एट दिस गैप प्रॉपर्टी नाउ. हाँ, यू कैन यूज गैप. गैप देने से क्या होगा, दोनों हो जाएगा. मतलब इट विल ऑल्सो वर्क फॉर रो, इट विल ऑल्सो वर्क फॉर कॉलम. मतलब इफ आई सिंपली गिव गैप 35 पिक्सल, तो दोनों डायरेक्शन में होगा, रो में भी होगा, कॉलम में भी 35 पिक्सल हो जाएगा. हाँ, यू कैन रिमेंबर दैट. देन अभी हम लोग को ये चाइल्ड एलिमेंट्स का डिस्कस करना है. चाइल्ड एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी ही डिस्कस करेंगे बाय द वे. इसमें ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है. लेट मी जस्ट सेंड द कोड. लुक, फ्लेक्सबॉक्स के लिए मैं डॉक्यूमेंटेशन नहीं भेजूंगा.
For position absolute relative उसके लिए भेजूंगा. I will not send the documentation for Flexbox because this is the best documentation on the internet for Flexbox. हाँ, इसको study करना because the diagrams are given very nicely. It's presented in a very nice way. So you can use this documentation itself to understand everything about Flexbox. I'm explaining only the main parts. अभी हम लोग को देखना है flex property. हाँ, flex grow property. Flex shrink is not important. Flex grow is important. Flex grow. Now this is a property that is used on the child. Properties for the children. As you can see, already हम लोग जब इस documentation को open करते हैं, I'm resending the link today also. So whenever we check this documentation, so we can see it's divided into two parts. एक है properties for the parent. We discussed this display property. सबसे पहले flex होना चाहिए. We discussed the flex direction, which controls the main axis and cross axis. We discussed flex wrap. How if there are multiple items नीचे कब आता है flex box use करने के time में. Okay, so these all properties ना flex flow इसको नहीं चाहिए अभी के लिए. इसको CSS shorthand properties में हम लोग discuss करेंगे. CSS shorthand properties. फिर justify content, which controls the alignment in the main axis. फिर explanation दिया है इधर. Then align items, which controls the alignment in the cross axis. इसके बाद align content, this is not for now. फिर row gap, column gap. हाँ, row gap, column gap हम लोग ने discuss किया है. So we have left this align content for later. So these all properties must be applied only on the parent. Okay, it's already explained here what is flex parent, what is flex child. Okay. So the child items इसमें भी diagram दिया है. The child items are those elements which are present inside that flexbox container. तो flexbox container वो होता है जिसमें तुमने display flex दिया है. Display flex हम लोग ने कहा दिया था इसमें ना parent में. तो इसका हर एक item and remember direct child item. हाँ, इसके अंदर कुछ item है span tag है, it does not care. Only the direct items become the flex items, and the flex items flow in whichever direction you give. Okay, if I have given flex direction column, तो ये column direction में flow होगा. If I have given flex direction row, then each items will flow in the row direction. So it's not something block inline ऐसा कुछ नहीं है. So it's a totally different concept. तो properties for the children हम लोग का order बोल के रहता है. First property order को पहले देखते हैं ना. So let us reduce the amount of items to reduce confusion now. Like this. So it's coming one below the other, which is flex direction column. So flex direction we can make it row. And अभी ये align item stretch है. Okay, इसलिए इसका height अगर 400 है तो पूरा 400 ले रहा है. 100 कर दिया मैंने height को. So this one we have to do align items start, flex start. By default हम लोग का flex stretch रहता है ना. Align items ALIGN flex start करने से क्या होगा, सारा आइटम स्टार्टिंग पोजीशन में रहेगा क्रॉस एक्सिस का. ये इश्यू पहले क्यों नहीं आ रहा था? बिकॉज इसमें मैंने कुछ हाइट नहीं दिया था. देखो, if I don't give any height, it will take the height only that is necessary. But if I give some fixed height like this and I don't give align items flex start, तो by default stretch होगा, because the cross axis में हम लोग का align items का default value है stretch. ठीक है, this one stretch it is the default value. तो इसको मैं flex start दे देता हूँ. align items flex start, तो ये स्टार्टिंग में रहेगा. Now let us look at this order property. Order property can control which item should appear first. Okay, देखो इसमें कुछ डायग्राम्स दिया हुआ है. जिसका ऑर्डर सबसे छोटा होता है ना वो पहले आता है. ओके, जिसका ऑर्डर सबसे स्मॉल है इट कम्स द अर्लीस्ट. जिसका ऑर्डर ज्यादा होता है इट कम्स आफ्टर दैट. एसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब एसेंडिंग ऑर्डर. डिफॉल्ट सबका जीरो रहता है. इट इज रिटन डिफॉल्ट इज जीरो. So this order property कहाँ use करने पड़ेगा this time? Where we have to use this time? This time we have to use in the flex children here, dot item. So in this dot item class we have to use order. Order suppose सबका zero रहता है, तो ये zero ही होगा ना. If I give order 1, सब अभी भी सेम ही रहेगा because सबका order क्या है, सेम ही है. तो इधर हम लोग को मतलब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इंडिविजुअली देना पड़ेगा. हाँ, सपोज मैंने आईडी दिया item 1, इसमें आईडी दिया item 2. Because if you give order to here in this class selector, हम लोग को पता है class selector सबको स्टाइल करता है ना, but we want different orders. इसको हम लोग को order अलग अलग करना है. Then we have to use separate selectors for each of them. तो even the item is same, हम लोग इधर नीचे यूज करेंगे item 1 hash item 2. This is the ID selector. हाँ, now look, item 1 में हम लोग देंगे order
1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। ओके, जिसका ऑर्डर सबसे कम वो सबसे पहले। 1 2 3 नॉर्मली आ रहा है सब, क्योंकि सबका सेम है। अगर मैं आइटम 2 का ऑर्डर 0 कर देता हूँ तो ये पहले आ गया, देखो आइटम 2 पहले आ गया। यू कैन सी दिस, whichever order is the smallest it comes earliest। ओके, देखो -1 सबसे छोटा है, तो इफ आई मेक ऑर्डर 3 -1 -1 सबसे पहले आएगा, देखो 3 सबसे पहले आएगा। इफ आई मेक दिस ऑर्डर 1, इफ आई मेक दिस 0, आइटम 1 को मैंने ऑर्डर 0 किया, तो ये आइटम हम लोग का बीच में आ गया। Are you understanding this point, order property? This is only to be used in the child, okay? Flex child. समझ में आ रहा है ऑर्डर प्रॉपर्टी प्रशांत? Okay, okay. Order property লগত even though in HTML, even if you have written in this order, by default तो এইটো আহিব, but with CSS you can control the order Flexbox में। So that's the power। मतलब मैंने जो डॉक्यूमेंट भेजा था इसमें फ्लेक्सबॉक्स होमवर्क, यू कैन सी हम लोग का इमेज आइकन लेफ्ट साइड में था, और हम लोग का ये सारा जो बटन है राइट साइड में था। सो इसको हम लोग टॉगल कर सकते हैं। इसको हम लोग ऑर्डर अगर 1 कर देंगे, इसको ऑर्डर 0 कर देंगे, मतलब छोटा कर देंगे सेकेंड आइटम को यूजिंग सम आईडी सिलेक्टर व्हिचएवर इट इज, तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ये राइट साइड में चला जाएगा। सो नाइस, यू डोंट हैव टू टच द HTML, राइट? यूजिंग जस्ट CSS भी तुम लोग ऑर्डर को स्वैपिंग कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। दैट्स द पावर ऑफ फ्लेक्सबॉक्स। इट प्रोवाइड्स यू सो मच कस्टमाइजेशन। रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी इज ओनली टू बी यूज्ड इन द चिल्ड्रन फ्लेक्स आइटम। इसको पेरेंट में यूज करने से कुछ नहीं होगा। You cannot use in the parent because this is not the property for the parent. So read this documentation is given here. It's very simple. Next important one is flex grow. Then I think other, yeah, flex grow. Flex grow के बाद एक और property है वो discuss करना पड़ेगा. So flex grow is like a ratio. Okay, flex grow is like a ratio. So if I have two items, item 1, item 2, item 3, right? Unless we give flex grow, ये expand नहीं होगा। Okay, main axis में expand नहीं होगा। If you want a particular item to expand in the main axis, you have to use the flex grow property. Here you can give any positive integer. Okay, any positive integer can be used. 1 2 3 4, any positive integer, हाँ, तो ये grow होगा। If I give 1, if I give 5, does not matter, any positive integer can be used, then this will grow। देखो grow हो गया, it means it can expand, it's now expandable। जितना grow हो सकता है वो grow होगा, ठीक है? Flex grow, I can give 1, basically 1 is used। ना देखो फ्लेक्स ग्रो मैंने आइटम 1 में दिया है। आइटम 1 कौन सा है? ये वाला 1 नंबर। इस हम लोग को कंफ्यूजिंग क्यों लग रहा है? देखो बिकॉज ऑफ ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर मैंने क्या दिया? कहीं पे -1 दिया है, राइट? आइटम 3 को, सपोज आइटम 3 को हम लोग 3 कर देंगे टू रिड्यूस कंफ्यूजन। आइटम 2 को 2, आइटम 1 को 1, तो ये फिर से पहले जैसा हो गया 1 2 3 HTML के ऑर्डर में, राइट? तो हैश आइटम 1, इसमें मैंने अगर फ्लेक्स ग्रो 1 दिया है तो ये ग्रो करता है, मतलब जितना स्पेस है अवेलेबल वो ले लेता है, ठीक है? ना इफ आई कॉपी दिस एंड पेस्ट इट इन आइटम 2, अभी ये दो ग्रो कर रहा है, मतलब once this space is taken by our third element, this one, अभी जितना भी स्पेस बाकी है ना, ये दोनों सेम सेम स्पेस डिवाइड कर लेगा, ठीक है? सिमिलरली फ्लेक्स ग्रो अगर 3 में भी देंगे तो ये तीनों सेम सेम स्पेस डिवाइड कर लेगा। ओके, सो लाइक दिस फ्लेक्स ग्रो। नाउ अभी देखो, अभी मैं आइटम 2 को फ्लेक्स ग्रो मैंने क्या कर दिया? 2 कर दिया आइटम 2 को। अभी देखो क्या होगा, कैन यू सी दिस? आइटम 2 का ज्यादा हो गया, इसका मतलब इसने डिवाइड किया है, इसने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इट्स लाइक रेशियो, ओके, रेशियो ऑफ विड्थ। तो देखो 1 + 2 + 1 कितना होता है? 1 + 2 + 1 4 होता है। सो इट हैज डिवाइडेड दिस एंटायर रो इनटू 4 पार्ट्स। ओके, 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है इक्वली, हाँ इक्वली। 1 2 3 4, दिस इज द 4। सो दिस इज 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अभी हम लोग ने फ्लेक्स ग्रो 1 आइटम 1 के लिए क्या बोला है? इसको 1 पार्ट लेना है। इट नीड्स टू टेक 1 पार्ट ऑफ दिस 4 पार्ट्स। तो इसने 1 पार्ट ले लिया, राइट? दिस इज करेक्ट, इसने 1 पार्ट ले लिया। अभी हम लोग ने बोला आइटम 2 को 2 पार्ट्स लेना है।
इट शुड टेक टू पार्ट्स. ओके, जैसे हम लोग चार्ट स्टडी करते हैं ना, पाई पाई चार्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दैट, बार ग्राफ. तो इसको दो पार्ट, दो हिस्सा लेना है, दो फ्रैक्शन. इसको एक पार्ट लेना है, इसको दो हिस्सा लेना है. व्हेनेवर वी स्टडी फ्रैक्शंस वी डू लाइक दिस, राइट? जैसे पिज्जा का कितना पार्ट होगा, उसको कितना पार्ट देना है. सो नंबर टू हम लोग का दो पार्ट ले रहे हैं, पार्ट वन पार्ट टू, राइट? इसमें दो पार्ट्स है, दो हिस्सा इसने ऑक्यूपाई कर लिया स्पेस. अभी थर्ड वन कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वन, जस्ट लाइक फर्स्ट वाला. तो ऐसा हो गया. ओके, सो यूजिंग दिस यू कैन एडजस्ट द साइज ऑफ दिस आइटम्स. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो समझना पड़ेगा, फ्लेक्स ग्रो अगर नहीं दोगे, द आइटम विल ओनली टेक एनफ स्पेस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट टू एग्जिस्ट. उसको जितना जगह चाहिए ओनली उतना ही लेगा, सफिशिएंट, उससे ज्यादा नहीं लेगा. जस्ट रिमेंबर दैट. लेकिन फ्लेक्स ग्रो देने से जितना एक्सपेंड हो सकता है वो एक्सपेंड करेगा, लाइक दिस. बट रिमेंबर, अगर तुम फिक्स विथ दे रहे हो, विथ सपोज तुम 200 दे रहे हो, देन कुछ नहीं हो सकता है. वेट 1 मिनट, आइटम 1 मिनट मैंने दिया है क्या, विथ 100 पिक्सल. हाँ, फ्लेक्स ग्रो मैं रिमूव करता हूँ. हाँ, ओके. तो विथ और दिस, विथ अगर दोगे ना, देन डोंट यूज दिस वन. ओके, फ्लेक्स ग्रो यूज मत करो, बिकॉज मैसअप हो जाता है डिजाइन, मैसअप. whenever you are using some fixed width, you want it to only exist at that width, right? 150 पिक्सल मतलब 150 पिक्सल ही होना है, उसको ज्यादा नहीं होना है उससे. don't use flex grow in that cases. So you should not use flex grow, otherwise it will exceed this 150. let us check. flex grow अगर मैं दूंगा 1, तो ये exceed कर रहा है. okay, so there's some issue, so it does not work properly. So that's why whenever you use flex grow, it means that we want to expand it dynamically. तो अभी देखो, अभी मैंने छोटा किया, छोटा करने से भी ये हम लोग का टू क्या हो रहा है, हमेशा दो रेशियो ले रहा है. इट्स टेकिंग टू पार्ट्स, वेदर वी एक्सपेंड, वेदर वी शॉर्टन. ओके, दैट्स इट. फ्लेक्स ग्रो. हाँ, इसका अगर मैं इसको सपोज आइटम 3 को मैंने 3 कर दिया, 1 2 3 जैसा ही कर दिया मैंने, तो क्या होगा, थर्ड एलिमेंट तीन पार्ट्स लेगा. ओके, अभी टोटल कितना हो गया, 1. ठीक है, 1 को हम लोग 3 कर देते हैं. देखो अभी टोटल पार्ट्स कितना हो गया, 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना होता है, 6. लेट मी ओपन द स्नैपिंग टूल. इसको समझ में नहीं आया है तो बता सकते हो. फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट होता है. दिस एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज इन द फ्लेक्स चाइल्ड. फ्लेक्स चाइल्ड में हम लोगों ने देखा ऑर्डर यूज होता है, फ्लेक्स ग्रो यूज होता है. देखो, तो इसमें ना हम लोग का तीन पार्ट्स है, सॉरी 6 कितना पार्ट, 5 पार्ट्स, 3 प्लस 2 प्लस 1. सो इसमें है ना, यस, 3 पार्ट्स, इसने 3 पार्ट्स लिया है, 1 2 3, 3 पार्ट्स. इसने 2 पार्ट्स लिया है, राइट? 1 2, इसने 1 पार्ट लिया है. हाँ, इसने 1 पार्ट लिया है. दिस वन इज टेकिंग 1 पार्ट. ओके, दिस इज द कैलकुलेशन डन बाय सीएसएस इटसेल्फ. ये 1 पार्ट ले रहा है. द स्क्रीनशॉट इज नॉट टेकन प्रॉपर्ली, दिस इज कंफ्यूजिंग. इसमें 3 पार्ट्स लिया है, बट इसने 2 पार्ट्स, इसने 1 पार्ट लिया है. तो यूजिंग फ्लेक्स ग्रो ऑन ईच आइटम, तुम लोग ऐसे रेशियो के जैसा डिवाइड करके बना सकते हो, जस्ट लाइक ग्रिड सिस्टम. ग्रिड सिस्टम कैसा होता है, हम लोग का 12 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, उसको कितना कॉलम चाहिए, उसको कितना, लाइक दैट. ये तो एडजस्ट. हाँ, इसको तुम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा. फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक नहीं चाहिए. ओके, फ्लेक्स श्रिंक इज नॉट रिक्वायर्ड. I don't remember if I even use this. I don't use this. Flex shrink is not required. Although you can study this yourself. Flex basis भी नहीं चाहिए. Align self. Align self को हम लोग डिस्कस करने से आज के लिए हो गया. Align self क्या होता है? Suppose I have given align items flex start. इसमें मैंने align items flex start दिया है. अगर मैंने सबका align items किया stretch, ठीक है, सबका align item stretch होगा, लेकिन ये दो नंबर को बस मैं सेंटर करना था, तो only this two number I want to center. तब तो सेंटर देने से क्या होगा, सब सब लोग सेंटर हो जाएगा, राइट? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दिस इज ओनली टू बी अप्लाइड इन द फ्लेक्स पेरेंट. align items property cannot be applied on the child. Otherwise we could have easily applied item number to align items center, right? So ये तो पेरेंट में देना पड़ेगा. सपोज मैंने स्ट्रेच दिया तो सबका स्ट्रेच हो गया ना. अगर मैं बस दो नंबर को सेंटर करना चाहता हूँ, या फिर फ्लेक्स एंड फ्लेक्स स्टार्ट, तो तुम लोग को यूज करना पड़ेगा align self. Instead of align items, you have to use align self property on the child element. तो आइटम सेट 2 को मुझे करना है ना सेंटर, तो आई विल यूज अलाइन सेल्फ सेंटर लाइक दिस. इसमें सेम प्रॉपर्टी से सेम वैल्यूज आएगा. हाँ, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्ट्रेच. ओके, यू कैन यूज सेंटर,
but you have to use align self. This time it is not align items. Okay, align self is to be used whenever you are using the child flex property. ठीक है, तो child item में ही use करना पड़ेगा. Align self will only align that particular element. ठीक है, उस particular element का cross axis में बस उसी को align करेगा. Now you may think, is there any justify self just like justify content? No, there is no justify self because हम लोग का जो भी main axis है उसमें तो move करने का position अभी नहीं है ना. Justify content में हम लोग का all items मतलब एक ही बार में align हो जाता है. ओके, उसमें individual चीज को हम लोग align नहीं कर सकते because that's the main axis. उस axis में सारा items flow हो रहा है. Okay, it's not possible to align the single item in that flow, but in this cross axis हम लोग individually align कर सकते हैं. Align items, flex and we can also do like this. Okay, so इसको number 1 को हम लोग flex start कर सकते हैं like this और center कर सकते हैं. इसमें कुछ confusion है तो पूछ सकते हो. I'm sending this screenshot. Class is done for today. With this we have covered the most important aspects of Flexbox and it is to be used from today all the time. Flexbox ही use करना पड़ेगा. In हाँ গ্রিড সিস্টেম তো ইউজ কৰিব নালাগে তে নহয় না গ্ৰিড চিষ্টেম ইউজ কৰিব লাগিব কিন্তু যেতিয়া তোমালোকে ইনসাইড এ গ্ৰিড কলম যেনেকুৱা এই হেডাৰ ভিতৰত দুটা এটা গ্ৰিড চিষ্টেমৰ তোমাৰ কলম বনালা সেইটো মেইন ফ্ৰেমৱৰ্ক আৰু সেইটো কিন্তু তাৰ ভিতৰত তোমাৰ সৰু সৰু আইটেম থাকে নহয় সেই তাতে মানে গ্ৰিড চিষ্টেম ইউজ কৰি থাকিব নালাগে ফ্লেক্সবক্স ইউজ কৰিব লাগে ওকে গ্ৰিড চিষ্টেমটো তোমাৰ হ'ল মেইন ডাঙৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ দি দিলে ৱেবছাইটত এটা ডাঙৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ দিলে নাও ইনসাইড দি ষ্ট্ৰাকচাৰ অল দোজ টাইনি পাৰ্টস যেনেকুৱা আমি দেখা পাইছিলো ইয়াতে আছিলে নহয় এই ইনপুটত তাৰ ভিতৰখিনি সাপোজ যেনেকুৱা এইটো ফৰ্মত তোমাৰ লেফট সাইডত আছে এইটো ইফালে আছে ইয়াতে গ্ৰিড চিষ্টেম নালাগে ফ্লেক্সবক্স লাগে তেনেকুৱা কিন্তু যদি ডাঙৰ এটা সাইড বাৰ আছে সেইবোৰ হ্যান্ডেল কৰিব গ্ৰিড চিষ্টেম ইউজ কৰিবা বুটস্ট্ৰেপৰ কাৰণ ফ্লেক্সবক্স লগত সেইটো এডজাস্ট কৰাটো বেছি কাম হ'ব মানে তেনেকুৱা ইউজ কৰি থাকিলে গম পাই যাবা দিয়া এই হেডাৰবোৰ এইটো বেষ্ট হয় এনেকুৱা লেফট এটা ফুলি ৰাইট আৰু সেন্টাৰিঙত বহুত হেল্প হয় সেন্টাৰিং কৰিব পাৰা জাস্টিফাই কন্টেন্ট সেন্টাৰ এলাইন আইটেম সেন্টাৰ এইখিনি প্ৰপাৰ্টিটো মনত ৰাখিব লাগে পেৰেন্টৰ কোনখিনি আৰু চাইল্ডৰ কোনখিনি অৰ্ডাৰ প্ৰপাৰ্টি বেছি ইউজ নহয় অৰ্ডাৰ প্ৰপাৰ্টি আমি ৰেয়াৰলি ইউজ কৰো স্টিল এইটো ইউজ কৰি তুমি এলাইনমেন্ট চেঞ্জ কৰিব পাৰা এলাইনমেন্ট নহয় পজিশনটো চেঞ্জ কৰিব পাৰা দেন ফ্লেক্স গ্ৰোটো ইউজ হয় কিন্তু ফ্লেক্স গ্ৰোৰ লগত ৰেচিঅ' টাইপ বনাব পাৰা আমি যেনেকুৱা লাগে যোনটো দুটা ৰেচিঅ' ডাবল স্পেচ ল'ব আউট অফ অল দ্য টোটেল ৰেচিঅ'জ ফ্লেক্স গ্ৰো এইটো আইটেমতে ইউজ কৰিব লাগে ফ্লেক্স স্ট্ৰিংটো আমি ইউজ নকৰো ফ্লেক্স গ্ৰোৰ উল্টা বস্তু হয় ইটস অপজিট ইট এলাউছ এন আইটেম টু শ্ৰিংক while flex grow allows an item to expand flex basis এইবোৰ আমি পিছত চাম whenever we study the css shorthand properties flex to same and align self কি হয় you can individually align a particular item কেতিয়াবা লাগা হয় আমাক only this item I want to center in those cases because align items আমি यूज কৰিব নোৱাৰো it's only for the parents align items देने से क्या होता है सारा items का alignment वो follow कर लेता है so you can use align self for individual alignment so let me send this doc code and also I'll send a video after some time of this class तो कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो प्रशांत को समझ में आया ओ प्रशांत का तो इंटरनेट इशू ठीक है फ्लेक्सबॉक्स का टॉपिक हम लोग का इसमें कवर होता है तुम लोग को डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ेगा यू हैव टू स्टडी द डॉक्यूमेंटेशन सो दैट यू कैन रिकॉल रिकॉल करने के लिए एंड जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट तो कंटिन्यू करो एनी इशू पूछना द जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस शुड नॉट गो डाउन you should not basically forget the language so try to do if it is possible try to do as much as you can Flexbox class उसका हो गया है ठीक है okay people I'll send a video on the group so you can leave now I think you'll be in hurry sure yeah a little bit of time I have though but then yeah you should better to be early yeah sure okay thank you yes just into class or two did you प्रशांत ये क्लास में कुछ इश्यू है क्या मतलब समझ में आया कि नहीं फ्लेक्सबॉक्स इंपॉर्टेंट है लेकिन
I try to understand, but my net was very bad. ओके ओके, हाँ, ठीक है, वैसे भी वीडियो, हाँ वीडियो देख पाओगे, तो आज आज का मैं अभी कर रहा हूँ। we are gonna send. हाँ, अभी मैं ये वीडियो प्लेयर में